हमारी मतलब औपचारिकता ही नहीं है तो a very good afternoon everyone. I Injit Kumar Jha welcome you to the ninth day of refresher course on holistic empowerment for stress management, a multidisciplinary approach integrating literature, art, social science, and medicine, organized by ASD College in collaboration with Ramanujan College under the aegis of GCC Malaviya Mission Teachers Training Program. We are honored to have with us Professor Ravi Kant as a speaker for this session. Professor Ravi Kant is professor and director of Indian Language Program at the Center for the Study of Developing Societies, CSDS Delhi. He is an intermediate historian, translator, and archivist. He is the author of the book Media Ki Bhasa Leela, published from Vani Prakashan, New Delhi in 2016, a book that drew on his doctoral work, Words in Motion Pictures from Department of History, Delhi University. His collaboratively edited book include Translating Partition, Studies Essays Criticism with Tarun Sent in 2001, Diwan-e-Sarai 1, Media Vimarsh, Hindi Janpad in 2002, Diwan-e-Sarai 2, Saharnama with Sanjay Sharma 2005, and English Life, Language Mixing Across Media in 2021 with Francesca Orsini. He has edited several special issues of journals, namely with Vinit Kumar, the special issues of Hans नवसंचार के जनाचार of New Social Media September 2018 with Arjumand Ara, Naya Path special number published on side Ludhiana's birth century, April June 2021, and with Rajendra Pathak, a special issue of Lamai on Lamai on proscribed Hindi Urdu literature. His collaborative filmography includes Andaz Productions, Kali Salwar 2001, an adaptation of Saadat Hasan Manto's eponymous story. He is also an editor of peer-reviewed journal Pratiman. In his archivist avatar, he has conceived several national projects, including the recently delivered Endangered Archives Program 1435, granted the British Library and Hindi Urdu Print for Cinema project. Modern Endangered Archives Program, UCLA, which is currently underway, and an intermedia digital archive of folk culture in North India granted by SESR is focused on the public resources of two eastern languages, Magahi and Bhojpuri. Professor Ravikant continues to research the social history of radio cinema interface in South Asia and is working on a couple of collaborative exhibitions on popular film appreciation. So today, Professor Ravikant will be speaking to us about dealing with stress in cinema. We are really honored to invite you, sir. Now the session is over to you. Thank you, Dr. Indrajit Jha, and apologies again for being late. I hope it's okay to speak bilingually, both in English and Hindi. जी बिल्कुल All सर. the content that I have is in Hindi, Hindustani, call it whatever. And okay, and my slides are in English. The points are in English. बीच बीच में हिंदी भी बोलूंगा, ठीक है? So this is a new challenge for me. This is a completely new topic. I have not thought much about it. I have not researched this topic. But we expect such things these days. You can be asked to speak about anything. And stress, when I talk to my colleagues in Delhi University, at least my ex-colleagues, I was also a teacher in Delhi University in between 93 and 2000. So I have several friends. I asked them, what are you stressed about? Tell me. And they're all stressed, always stressed. So they are doing some odd job which is related to knack or other. Okay. So they are busy the whole year teaching less but filling up knack related forms more. So that's one major source of stress for them. So if DU wants its teachers to be less stressed, it must rethink the knack format. There should be better, ways of judging the quality, whether it is academic quality, whether it is the contributions that the teachers are making as far as teaching is concerned,
what is the best way in which they can use their time and stay stress free. So NAC has to be rethought. That's my personal opinion. Because I was a teacher and I can see from a distance that my colleagues are really stressed. But that is not the topic I'm going to speak today. I'm going to speak today about cinema. And cinema, well, there's no gain saying, ये करने से कोई फायदा नहीं है कि सिनेमा देख करके आदमी रिलैक्स करता है, ठीक है, यानी उसका स्ट्रेस इंसानों का कम हो जाता है। एक्चुअली सिनेमा देखा जाए, आपको स्लाइड दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, अगर देखा जाए तो टाइम पास माना जाता है इसको। टाइम पास पर्यायवाची है मनोरंजन के लिए। अच्छा, कैसी थी फिल्म? व्हेन यू आस्क समबडी इफ द पर्सन हैज विजिटेड अ सिनेमा हॉल और हैज वॉच्ड इट ऑन on a kind of TV screen, then the person would say time pass. Well, it's a good entertainment. So cinema is time pass, huh? As if your time does not pass if you don't watch cinema. It's so important. टाइम पास मतलब अच्छा टाइम पास है ना, यानी इट एंटरटेन्स यू, इट फिल्स योर टाइम इन अ वेरी गुड वे, इन एन एंटरटेनिंग वे, इन अ फुलफिलिंग वे, इन अ वे दैट other things perhaps don't do. Eh? So it is a cinema as time pass is a peculiar South Asianism. It's a term that we use only in South Asia. Cinema as time for cinema at least. So it is a critical source of entertainment, we all know, in South Asia. And when I mostly talk about India, and I mostly talk about Hindi cinema, but I am referring to South Asia in general, because we cannot divide South Asia into countries and forget immediately that cinema started in undivided South Asia, right? And at least Hindustani cinema was one big, huge chunk of that united cinema industry, which had multiple locations from Pune to Kolhapur to Madras to Kolkata to Lahore, right? And Bombay, of course. तो इतनी जगहों पे फिल्में बन रही थी आज़ादी से पहले। और इसलिए सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का स्रोत बन करके उभरता है सिनेमा। हम जानते हैं पूरी 20वीं सदी में इसका प्रसार होता है, इसका एक्सपेंशन होता है, ये फैलता चला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द 1930s एंड 30s में आप जानते हैं कि सिनेमा बोलने लगता है ना? इट बिकम्स व्हाट वी कॉल टॉकीज। technology to supply sound also comes. Earlier, you had silent cinema, and that creates interesting, and it lasts. Even now, most of films are talkies. You rarely have a film like Pushpak, which is a silent film, but it can be equally entertaining. I'm not saying that silent cinema was not entertaining, it was, but the talkies were much more entertaining and were much more acceptable. Also, to the credit of what we call Bollywood, it has withstood the pressure from Hollywood. It has maintained its market share in a way, so to speak, in today's lingo, right? uh, it has been able to create new markets for itself globally. So it's not as the diaspora spreads, पूरी दुनिया में जो प्रवासी दिखाई दे रहे हैं इतने सारे, वो सब सिनेमा के भी भक्त हैं, सिनेमा के भी प्रशंसक हैं, सिनेमा के उपभोक्ता हैं, सिनेमा के आलोचक हैं, सिनेमा के समीक्षक हैं, यानी सिनेमा को जीते हैं वो। और इससे भी तय होता है कि सिनेमा has always been changing according to the taste of its audience, according to the aesthetic practices prevalent at a particular time, right? According to the influences it has borrowed from various other types of cinema, whether it is Italian neorealism, whether it is Soviet realism, whether it is Hollywood itself, whether it is British cinema, whether it is Japanese cinema. Indian cinema has learned from all these sources, German cinema also, but और टेक्नोलॉजी खुद विदेशी ही थी, है ना?
लेकिन जैसे ही विदेशी थी उस समय देसी भी थी ये टेक्नोलॉजी। इसका जिस समय ये वैश्विक तकनीक प्रौद्योगिकी पूरी दुनिया में फैल रही है, उसी समय हिंदुस्तान में भी फैल रही है। ये इंटरेस्टिंग है कि दोनों में लैग नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में आजादी लोगों को पहले मिली, हमें बाद में मिली, उस तरह का लैग है। हम तो अभी भी गुलाम थे अंग्रेजों के, ऐसा नहीं है, वो वाला लैग नहीं है। सिनेमा 1890 से ही हिंदुस्तान में भी आ गया, और दादा साहब फाल्के ने 1913 में भारतीय फिल्म पहली बनाई, इसलिए उनको पिता कहा जाता, फादर कहा जाता ऑफ इंडियन सिनेमा। तो एक साइमल्टेनिटी है, दोनों लगभग एक साथ चलते हैं, ठीक है। सिनेमा में पॉपुलर इन्वेस्टमेंट बल्कि ऑब्सेशन है लोगों का सिनेमा के साथ। सिनेमा को लोग खाते पीते जीते हैं, लगभग उसी तरह जो क्रिकेट के साथ हो गया है बाद के सालों में। सिनेमा के साथ वो पहले ही हो गया था। अब आप कह सकते हैं कि सिनेमा भी उतना ही लोकप्रिय है जितना कि क्रिकेट लोकप्रिय, आप देख सकते हैं, है ना। सिनेमा एक मोड ऑफ सोशलाइजेशन है, यानी आप सिनेमा के थ्रू अपना सामाजिकरण करते हैं, यानी समाज में भी जीते हैं, रिश्ते बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं ढेर सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर हूं, सदस्य हूं, जो सुबह सुबह गाने पोस्ट करने में लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि रेडियो काफी नहीं हो, जैसे कि आपके पास जो आईपॉड है वो काफी नहीं हो, तो लोग व्हाट्सएप पे भी अपना गाना क्यूरेट कर करके दे स्टार्ट क्यूरेटिंग सॉन्ग्स। फॉर एग्जांपल, अभी अनिल विश्वास, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, या गुरुदत्त, इनका बर्थ बर्थडे गुजरा है, बर्थ सेंटेनरी गुरुदत्त का है, तो गुरुदत्त से जुड़े तमाम गाने वो पोस्ट करेंगे, ठीक है। गुरुदत्त से जुड़ी स्मृतियां पोस्ट करेंगे, गुरुदत्त से जुड़ी कहानियां पोस्ट करेंगे। यानी सिनेमा को लोग जीते हैं कई तरह से। उसको मेमोरी के रूप में भी जीते हैं, उसको इतिहास के रूप में जीते हैं, उसको मनोरंजन के रूप में जीते हैं, लेकिन उसको प्रेरणा के रूप में भी जीते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप बैठिए कि ऐसे कितने प्रेरणास्पद गीत हैं जो सिनेमा ने दिए हैं, है ना, जो एक थके हारे, टूटे, अवसादग्रस्त और गमगीन इंसान को खुश कर सकता है ना। जैसे एक गाना आता था किशोर कुमार का, 1 तारीख को बजता था, वो हमेशा रेडियो सिलोन से बजता था। वो गाना फिल्मी गाना ही है। खुश है जमाना आज 1 तारीख है, ठीक है। 1 तारीख क्यों? क्योंकि 1 तारीख को आपको सैलरी मिलती है, मिडिल क्लास को और वर्किंग क्लास को सैलरी मिलती है, ऐसे लोग जो काम कर, और सैलरी मिलना सबको एक खास तरह की खुशी तो देता ही, हमें खुशी देता है। उसी से सारी बाकी खुशियां संभव हो पाती हैं। तो वो गाना हर बार ये करता था, रेडियो सिलोन उसको प्ले करता था 1 तारीख को। इतना धंसा हुआ है, यानी आपकी सुबह, आपकी शाम, आपका दोपहर, आपके आपके महीने की 1 तारीख से आखिरी तारीख तक, आपकी दिवाली, आपकी होली, आपके जितने भी त्योहार, ईद, क्रिसमस, न्यू ईयर्स, बर्थडे पार्टी, रक्षाबंधन, ये राष्ट्रीय गीत भी, है ना। जब आप सोचने लगते हैं तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, इसमें भी बजाने के लिए हमारे पास फिल्मी गीत ही होते हैं, है ना। अभी मुहर्रम गुजरा है, तो मरसिए भी आपको मिल जाएंगे फिल्मी गीतों में। फिल्मी फिल्मों का इतना बड़ा आर्काइव है। द फिल्म इटसेल्फ इज अ ह्यूज आर्काइव, बिग आर्काइव ऑफ practically everything, of popular culture, of cities, of the way we dress, of the way we talk, the languages that we speak, the way we interact, the way buildings have been constructed historically, the way roads have been built historically, the way rivers have changed their courses, the way Char Dham looked, for example, in 1940s, or the way Char Dham looks right now, right? Cinema has recorded everything for its screen, okay? And it is available to us for जितना भी सिनेमा बच गया है। बहुत सारी फिल्में गायब हो गई हैं, जल गई हैं,
आर्काइव में जल गई हैं, गायब हो गई हैं, लोगों ने उनको जला जला के, रीलों को जला जला कर उससे चांदी निकाल लिया है. Those films are gone. So what is available instead are the paper archives. We have the paper archives related to that cinema. We have stories of those films. We have some dialogues also of those films. Then we have, thankfully, we have a lot of songs from those films. So those traces are available to us. लेकिन फिल्में भी काफी हैं. And thanks to YouTube, that archive, which was available only at National Film Archives of India, है ना, या बाद में जब वीडियो रेवोल्यूशन हुआ तो वीडियो के थ्रू हम सब के पास आने लगा. लेकिन वो अब यूट्यूब के जरिए सबके पास सब कुछ उपलब्ध है. एंड इट्स अ ग्रोइंग आर्काइव. सो सिनेमा इज एन easy repertoire, and a huge archive that contains all kinds of songs. I will talk about that later. So it is a source of memory. It is a source of inspiration. It is a source of strength. But it is also can also be a source of tension. Let's not forget it. Otherwise, our cinema would not be so rich if it would not give us stress, right? So there's an old debate in cinema. Is it only for entertainment, or should it also educate us? Does it have a social role? Does it have a pedagogic role? Or is it only for entertainment? कि हाँ भाई हमने पैसा दिया और हमारा पैसा वसूल हो गया क्योंकि हमने मजे किए, डांस ड्रामा सब कुछ देखा, ठीक है, कैथारसिस भी हुआ, ये सब हुआ और हम आ गए देखकर, फिल्में देखकर आ गए. तो ये there is an old debate and the demand, because cinema arose at the time of freedom movement. So the demand was from the nation and from the society and from the national leaders and from the people who ran real India at that point of time. Because remember, before cinema stars became big, we had political stars that were bigger. That's why it's important that Gandhiji, when Gandhiji said he doesn't like cinema, Khwaja Ahmad Abbas would quarrel with him, would write a letter, open letter to him in Film India. And it matters that Dr. B.R. Ambedkar liked cinema. What is there at stake? It's the same medium, right? But one person does not like it and the other person encourages it. He says, we must welcome cinema. But both are agreed that cinema must play a positive pedagogic role. It must work towards reforming the society. It must work towards educating the uneducated. Why? Because cinema is the only medium which you can understand without reading. You don't have to be a great scholar to understand the import of a story, the import of a song. Of course, if you are well read, you can read the very song, the same song or the same story in many different ways, in a far richer ways. But even if you are illiterate, you can enjoy cinema. And you can also understand it. You can also understand the difference between what is good, what is bad. What is the moral, What is the moral? Yes? Is there a question? Okay. So what is the moral fight amongst the various characters? Is there a fight, class fight? Is there a caste fight? Is there a gender fight? Is there a fight over space? What all is happening in the drama that a particular film is trying to present? Everybody understands, right? What did Amitabh Bachchan represent when he rose as angry young man, right? What happens afterwards? Where does that angry young man disappear, right? What is the history before that? We will come to all of that. Okay, so this debate has been there and we must keep that in mind. The role of cinema as both pedagogical object
as well as source of entertainment. Okay. On the whole debate, commercial versus art cinema, Sarthak cinema it was called in Hindi, right? As if the commercial cinema is nirarthak, right? Think about the term. It's also known as samantar cinema or parallel cinema, a cinema that walks parallel to the mainstream commercial cinema. Of course, the question here that I would pose is, do the illiterate does the illiterate population, the masses of our country, do they also follow art cinema in the same way as they follow what is called popular cinema? And then there is a middle of the road cinema, the cinema of Basu Chatterjee, cinema of Shyam Benegal, cinema of Hrishikesh Mukherjee, that had a lot of light humor. It was full of humor, right? So that did work as a major source of relief, of stress. It did work as stress buster, right? So anyway, last point on this slide. There is also debate, therefore, within film studies that songs are not a great thing because songs are fantastic. Songs take you away from the narrative which is assumed to be realistic. कि कहानी तो ठीक ठाक चल रही है, यथार्थ के धरातल पर चल रही है, लेकिन ये जो गाना आता है, ये गाना इंटरप्शन पैदा करता है, व्यवधान पैदा करता है, गति को रोकता है सिनेमा की, ठीक है, यानी दूर ले जाता है सिनेमा की अंतर्वस्तु से। ये डिबेट भी रहा है, ठीक है। काफी समय तक बड़े बड़े दिग्गजों ने, चिदानंद दास गुप्ता, ये जो सारे आर्ट सिनेमा टाइप के क्रिटिक्स थे, उन्होंने जी भर भर के कोसा है फिल्मी गानों को। हमें ये मान के चलना होगा कि फिल्मी गाने अगर नहीं होते तो सिनेमा का चरित्र वो नहीं होता जो उसे हिंदुस्तानी सिनेमा बनाता है या दक्षिण भारतीय सिनेमा बनाता है, जो कि पारसी थिएटर की विरासत से भी आता है, ठीक है। ये दिलचस्प है जानना कि पारसी थिएटर की विरासत ने सिनेमा को विरासत सिनेमा में आगे बढ़ती है, और वो बढ़ती है गानों के जरिए भी, कॉस्ट्यूम्स के जरिए भी, थीम्स के जरिए भी। तो जो आप शुरू में जो सारी भक्ति प्रधान फिल्में आप देखते हैं, वो भक्ति प्रधान नाटक पहले से पारसी थिएटर में भी आ रहे हैं। जिस तरह के अरेबियन नाइट्स के स्टोरीज आप देखते हैं पारसी थिएटर में और फिल्मों में भी, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक ऐसा दौर है जब पारसी थिएटर के लोग सिनेमा में भी काम कर रहे हैं। राधे श्याम कथावाचक दोनों के लिए लिख रहे हैं, नारायण प्रसाद बेताब दोनों के लिए लिख रहे हैं, आगा हशर कश्मीरी दोनों के लिए लिख रहे हैं, सोहराब मोदी दोनों ही बैकग्राउंड से आ रहे हैं, पृथ्वीराज कपूर दोनों ही से आ रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प है, ये कि 20s 30s का एक ऐसा दौर है और जब दोनों एक साथ चल रहा है और दोनों में क्रॉसओवर हो रहा है ना। तो बहरहाल, तो इसी चीज को, जिस चीज को कला समीक्षक या कला सिनेमा के जो समर्थक थे, द गाइज हु वर सपोर्टिंग आर्ट सिनेमा इन द नेम ऑफ इट बीइंग more realistic because it did not have songs, right? Lalita Gopalan, in her work, calls it cinema of interruptions. She says, yes, let's admit that our cinema is the cinema of interruptions, and we don't get interrupted. First of all, songs also take the story forward, and even if they don't, there is something happening in the song. We will come to that. So cinema of interruptions is not such a bad thing. We should not be so realistic, okay, in our... So that's what I was coming to. Musicality and intermediality of Hindi cinema. दो चीजें इसको ध्यान में रखने लायक है. First, that songs are short films within films. If sometimes they run parallel, sometimes they are like item numbers. What is an item number? Everybody says that an item number is a sexy number, right? My point is, any number
that is not directly linked to the narrative is an item number. Okay? For me, even Deshbhakti Geet, which may not be linked to the main narrative, can be an item number. Raksha Bandhan Geet, which may not be linked to or may not push the story forward, is an item number. Because it participates by inserting the song in the film is participating in the real popular living popular culture. Okay? And it becomes a resource for us to go to when we need it. So imagine if you can't celebrate festivals, you will be stressed. Festivities bring to you, and we have too many festivals, right? Festivities give you break from your everyday humdrum reality. Festivities ask you to pause. आज छुट्टी है, आज आराम कीजिए, ठीक है? आज कुछ और कीजिए, है ना? आज बच्चों से मिलिए, रिश्तेदारों से मिलिए, लोगों से गले मिलिए, उनको उपहार दीजिए, उनको खुश कीजिए, उनसे खुशी ढूंढिए, ठीक है? अब सारे फेस्टिवल्स के गाने हैं आपके पास, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और वो फेस्टिवल्स उन गानों के बिना नहीं हो सकते। तो कितना बड़ा एक लिविंग रिलेशनशिप बनता है सिनेमा का आपके जीवन के साथ, और स्ट्रेस को कैसे वो कम करता है, कुशन की तरह काम करता है, ठीक है? तो आइटम नंबर्स, मैंने कहा वो गाने जो लिंक्ड न हो नैरेटिव से, आइटम नंबर्स हैं। इसीलिए भजन डाले जाते थे, इसीलिए कव्वालियां डाली जाती थी, इसीलिए डिस्को नंबर्स भी डाले जाते थे, इसीलिए क्लब नंबर्स भी डाले जाते थे। तो कितने गीत हैं, गीतों की कितनी विधाएं हैं, so many genres of songs you will find within films, right? You go on counting and you'll find everything, right? मुजरा से लेकर के मर्सिया तक, एज आई सेड, पूरा रेंज आपको मिलेगा, ठीक है? तो यूजफुलनेस है उनका, उन गानों का रियल लाइफ में, जैसा कि मैंने कहा। दूसरी बात, अनोखी बात जो है सिनेमा की, कि सिनेमा सिर्फ सिनेमा के रूप में हम न देखें। मैं आपसे अपील ये करता हूं, गुजारिश करता हूं, सिनेमा की एक लंबी जिंदगी है, इसका एक लंबा उत्तर जीवन है, जो कि सिर्फ पर्दे पर नहीं होता, बल्कि पर्दा पर सिनेमा जब खत्म होता है तो उसके बाद वो लंबी जिंदगी उसकी शुरू होती है सिनेमा की, ठीक है? यानी सिनेमा जब प्रिंट में आता है, गानों के रूप में, चौपतिया बुकलेट्स आप में से कई लोगों ने पुराने सिनेमा घरों के आगे बिकते हुए देखे होंगे, ठीक है? अभी मैं उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाऊंगा। तो प्रिंट फिल्मी पत्रिकाओं में जो गॉसिप छपते हैं, जो पोस्टर्स छपते हैं, जो तरह तरह के रूप में, कॉमिक बुक के रूप में उनको रिप्रोड्यूस किया जाता रहा है, कहानियों के रूप में जो उनको रिप्रोड्यूस किया जाता रहा है, गाने तो थे ही। फिर रेडियो, सिनेमा और रेडियो का जो रिश्ता हिंदुस्तान में या साउथ एशिया में है, वो कहीं नहीं है। सिनेमा और संगीत का जो रिश्ता साउथ एशिया में है, वो कहीं नहीं है। क्यों? अब सोचिए आप, रेडियो का अस्तित्व क्या हो साउथ एशिया में, अगर कहा जाए उनसे कि आप सिनेमा के गाने नहीं बजाएंगे, सारे चैनल सूख जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि कौन कंटेंट हम कहां से सोर्स करेंगे। और ये एफएम की दुनिया में भी सच है। विविध भारती चैनल जो 1957 में शुरू हुआ, आज भी 106.4 पे चल रहा है। बाकी चैनल भी हैं, वो भी गाने चला रहे हैं। आप कितने सारे आरजे को देखते हैं जो कि लोगों को हिंदी या उर्दू पढ़ा रहे हैं गानों के जरिए, ठीक है? समझा? यानी गाने वो सोर्स हैं सिनेमा, लेकिन सिर्फ गाने नहीं है, फिल्मों के बारे में कहानियां हैं, फिल्मों के बारे में याददाश्त है ना, एक नॉस्टैल्जिया है। और मैं ये आर्ग्यू करना चाहूंगा आपके बीच में, चूंकि हम स्ट्रेस पर सोच रहे हैं, कि क्या नॉस्टैल्जिया इतनी बुरी चीज है जितना हम अपने मॉडर्निस्ट अवतार में उसको कह देते हैं? इज इट सो बैड?
Nostalgia cannot always be bad. It's good memory of the past. If it is good memory of a past, how can it be bad? It can bring good feelings in your present as well. That's what is important about nostalgia. So I can have a feeling of nostalgia about the days that I spent in the mango orchard while I was a child, right? When I see mangoes in the market, immediately I recall those days, those happy-go-lucky days when I went from school to my village, right? And to the mango orchard. And we were carefree. We just ate mangoes and we drank from the pond, no filter water. And we hardly ever fell sick. So we have to, understand that this stress that we are talking about is also a product of the life that we are living, a kind of urban life that we are living, a kind of 9 to 5 life that we are living, a kind of, there's many sources of stress. It can be EMI, it can be your children's education, anything, security. Nobody is secure. So that is another financial security. We are living precarious lives. We are living on the edge. So in this context, I would say nostalgia is not bad. And film nostalgia gives us that cultural depth, that sense of togetherness, that sense of bonding. Okay, you like Kishore Kumar? Yes, yes, I love Kishore Kumar. Do you like Mohammad Rafi? Yes, I love Mohammad Rafi. Do you like Lata Mangeshkar? Yes. Let's form a community. I have known several people who do this day in and day out. I have been to Sri Lanka with a group of retired people from Maharashtra and Gujarat. What was their dream when we all went together? We went there just to pay a pilgrimage to Radio Ceylon. What is Radio Ceylon? Radio Ceylon is this iconic railway station in Radio Sri Lanka. And it came into being because Indian government in Nehruvian time banned film songs. And so people said, fine, you are not playing. So All India Radio was not playing film songs between 1952 and 1957. So people said, fine, but the radio is playing those songs. You just have to tune into Radio Ceylon. So people kind of revolted against the policy of the Indian government, and the Indian government had to finally give in. Okay. So this is what we need to understand, that the radio as a source also remains very important. Television, that's recent history. So I'm not going to say anything. Sunday film was a must for several of us in those black and white days after the Asian Games village and after 1982, when television became very popular. Television also acted as an extension of cinema, right? Remember McLuhan? McLuhan said, media are extension of our sense organs. But he also said that one media is the extension of another. Okay, so they also feed into each other. To make sense of film studies in South Asia, you have to make sense of intermediality. Some of us at least believe in that. Okay, so long afterlife of films beyond screen. That is why you have parallel oral stars from K.L. Sahgal, Talat Mahmood, Begum Akhtar, right? All these people who sang Amir Bhai Karnatki to Asha Bhosle and beyond, right? This generation, you know better than I do. Okay. So we have parallel oral stars while we have film stars. We have so much pleasure. We have so much joy when we listen to them. We listen to them to reduce our stress, right? We listen to them to enjoy, to party, right? Earlier, people used to party in the park by playing radio. Now, of course, music is portable. Music is available to us on this
on this classic convergent media called the internet. You play anything you want to. So, then another point that we need to remember is cinema in South Asia is not a pure package. Okay, it is a thali. So big thali, something like Rajasthani thali, where you have little bit of everything. Okay, so you could have a bhajan, so it is religious. You could have a shlok or a sher right at the beginning, right? It could be a romantic film like Devdas. It could also be tragic like Devdas, once again. Comic, also there are characters like Motilal in Devdas so they are comic scenes and comic characters. Vidushak in the classic Sanskrit tradition, Vidushak who was usually the friend of the Raja, or the Sakhi who would be a friend of the Rani, right? And together they made a lot of merry. Horror. Horror is not only horror, we know. There are several other things. The horror can also be musical, be Salbad, right? Thriller, social. All these films are social also. Even religious and mythological films that we have produced are social films. If you don't believe me, go and watch Kan Kan Mein Bhagwan. Kan Kan Mein Bhagwan looks like a religious film, but it starts with the temple entry of Harijans. That issue, right? The first frame is about caste and outcaste and about social reform and about religious reform, right? So social is what is the dominant genre, but it is a package. It's a thali. It has everything, okay? Then family melodrama, remember, is also important. Melodrama is basically, very crudely speaking, as defined by Therese, is a fight between the good and the evil. The good typically is the hero or the heroine. The bad typically is the villain. Throughout, there is a tussle. Ultimately, if it is a comic film, the hero wins. And by that time, the hero and heroine are united in any case, so they both win, right? In between, you have a whole lot of scenarios, right? There are happy songs, then there are sad songs. There are all kinds of things happening there, okay? But melodrama is also introduces another element, what if? There are various kinds of possibilities that one narrative opens, and we immediately side with the good. Even if we are evil, when we watch a particular film, we are not the evil person that we usually are when we are not watching. So it does something to us as a movie goer, right? We have to take sides in this melodramatic fight, and we participate, and we have seen people clapping, we have seen people saying hurrah, right? We have seen people or maru karte hue, right? Of course, nowadays there's less noise in our cinema halls because it's very gentrification हो गया हमारे सिनेमा हॉल्स का. लेकिन पहले लोग काफी शोर मचाते थे, and they also caused a lot of discomfort to women. So सिनेमा जाना भी स्ट्रेस का काम हो सकता था, as if, लेकिन सिनेमा में प्लेजर भी है, that we know. That is something we need to discuss at some length about movie going experience and how uncivil it has been throughout history. That's an interesting. Now, there's a whole journey, as I said. This cinema is rich in history. It has taken several twists and turns over the years. In the last 100 years or so, more than 100 years now, it's possible to identify that this cinema earlier in the 30s and 40s, let's call it the Saigal period, right?
It was mired in gham, dukh. So dard ishq, ishq mein fana ho jana, to die, right? To perform the ultimate sacrifice, to wallow in self-pity, right? दुखी ही रहना है. ये है ना गाना, क्या है? और मर जाना, तेरी दुनिया में जी लगता नहीं, वापस बुला ले वो मालिक मुझको उठा ले, राइट? If you, I did once, look at those songs. There's so much dukh and gham in those films. Look at the characters you had, and look at the epithets they were given. Tragedy king किसको कहा गया? दिलीप कुमार को. ट्रेजेडी क्वीन किसको कहा गया? मीना कुमारी को. बेचारी रोती ही रही जिंदगी भर. और फिर कौन थे? गुरुदत्त साहब. गुरुदत्त साहब भी बहुत मेलंकोलिक थे, है ना? प्यासा, कागज के फूल, बहुत सारे. दिलीप कुमार साहब को तो कहा गया, बनी रूबिन ने कहा है, उनकी जो लिखी बायोग्राफी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी कि आप अब कुछ कॉमिक फिल्में कीजिए. आप इतने ब्रूडिंग रोल्स, मेलंकोलिक रोल, ट्रेजिक रोल्स कर रहे हैं कि आप अफेक्ट हो रहे हैं खुद ही. आपका मानसिक स्वास्थ्य गिर रहा है. ये देखिए, ये भी एक इतिहास है कि लोग भूमिका करते करते अपना मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं. यानी उनको डिप्रेशन हो सकता है, उनको ही स्ट्रेस हो सकता है. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये लोग थे. ट्रैम्प के रूप में राज कपूर, है ना, जो काफी दुख झेलता है बंदा, भले ही वो खुशी के भी गीत गाता है. हालांकि मुकेश के दर्द भरे गीत बहुत हैं उनके हिस्से में, उनके पाले में, राइट? तो ये शब्द जो है, चिंता, दुख, अवसाद, गम, ये बहुत आता है. अवसाद तो कम इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये लोग, न होता गम जुदाई का तो दीवाने कहाँ जाते. इट इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर दीवाना, फॉर दोज हु आर मैड. दीवाना कौन है? अक्सर नायक दीवाना होता था. अक्सर नायक शायर होता था, जो इस तरह की शायरी करता था और उनको गाता था, परफॉर्म, विजय की तरह. क्या? जला दो, फूंक डालो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? देयर इज नो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. यू आर आइडेंटिफाइंग विथ दोज who are just, but those who are poor, and you don't see any ray of light for them. Therefore, your poetry also speaks of a lot of sadness. There is a kind of convergence between personal grief and social grief. That was a period. And of course, romantic grief of being, continually being spurned by your lover. वो भी एक प्रोजेक्ट था कि बॉस इश्क नहीं हो पा रहा है, हमेशा रिजेक्ट किया जाता हूं, लगातार रिजेक्ट किया जाता हूं. ठीक है, वो अपने आप में एक सिनेमा में, हर सिनेमा में एक प्रोजेक्ट होता था, है ना? वियोगी होगा पहला कवि, सॉरी टाइपो है यहाँ पे, वियोगी होगा पहला कवि सिर्फ सिनेमा में नहीं है, ये साहित्य से भी आ रहा है. वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान. ये महर्षि वाल्मीकि तक जाता है. उनके बारे में कहा गया कि क्रौच वध जब होता है, शिकारी ने मार दिया, पेयर को सेपरेट कर दिया, क्रौच और क्रौची को, तो वियोग में कविता शुरू हुई वाल्मीकि की और रामायण लिखी गई. क्या बात है. उसी तरह से फिल्मी सॉन्ग का फिर से, है ना? और क्या लिखा था? महादेवी वर्मा ने लिखा था, जो कि मीरा जैसी थी, आधुनिक मीरा जैसी थी. गलाकर मृत पिंडों में प्राण, बीज करता असंख्य निर्माण. अपने आप को आप गलाएंगे तभी नए नए अंकुर फूटेंगे, नया जीवन तभी पैदा होता है. ठीक है. महादेवी, she lived alone all her life, no companion, right? But a search for a companion, like Mirabai, right? तो राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है.
मैंने शुरू किया था कि इतना कुछ है स्ट्रेस बर्स्ट करने वाला सिनेमा में, लेकिन एक ऐसा फेज भी है सिनेमा में जिसमें कि दुख ही दुख है, जो कि रॉक स्टार तक भी आता है, उस तरह का रोमांटिक फिगर। क्योंकि दुखी होगा तभी वो अच्छी कविता लिख सकता है, अच्छा म्यूजिक बना सकता है, अच्छी तस्वीरें बना सकता है। अच्छा क्रिएटिविटी तभी आती है जब इंसान सफर करता है, दुखी होता है। अब इससे अगर हम तुलना करें आज के जीवन को, जब हमें लगता है और एक ऐसा माहौल भी है कि हमें पल पल पग पग पर थेरेपी चाहिए, इस पर हम मैं खुले दिल से सोचना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू पास एनी जजमेंट on the world that we live in and the kind of stress that we all face. But this is a different world. There was something else happening at that time when people wallowed in self pity, and yet they could embrace death very happily. I don't know. I don't know. That is a great ideal or role model. I don't know. But we have passed through a stage like that. एक अगर आप भक्ति के कई फॉर्म्स होते हैं, है ना, जैसे साख्य भक्ति करते हैं आप, मधुर भक्ति करते हैं, लवर्स की भक्ति, मीरा और कृष्ण की भक्ति जो है, जैसे कि उसी तरह से एक करुण रस है भक्ति में कि भगवान तुम मेरा उद्धार करने वाले हो और मैं तो दीन हूं, मैं दुखियारा हूं, मैं जितना लोली रहूंगा उतनी ही जल्दी तुम मेरा उद्धार करोगे। तो दैट ऑल्सो कंटिन्यूड फ्रॉम द सूफी भक्ति ट्रेडिशन थ्रू पारसी थिएटर इनटू सिनेमा। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सोशल हिस्ट्री। ओके, बट वी हैव रफी, मुकेश और लता के दर्द भरे गीत बहुत आम थे, और तलत महमूद के भी। ठीक है, आजकल उतने नहीं होते हैं। आजकल तो ब्रेकअप सॉन्ग भी होता है, राइट। सो वी हैव ट्रैवल्ड फार कि हमने ब्रेकअप कर लिया, मेकअप कर लिया और सब कुछ कर लिया। क्या सुंदर सा गाना है ना, और पार्टी में डांस जो कर रही है हीरोइन, है ना। लेकिन विदूषक पे हम लोग बात कर ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एक दो बातें और विदूषक पे कहना चाह रहा हूं। चूंकि इतना स्ट्रेस, हम डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने उस इंटरव्यू में कहा था, 1942-43 के उस इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग इतने हाई स्ट्रेंग लोग हैं, इतने तनावग्रस्त लोग हैं समाज में, अपने रिश्तों में बहुत तनाव को लेकर जीते हैं कि हमें थोड़ा ह्यूमर की जरूरत है, हमें खोलना चाहिए, हमें थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए अपने आप को, है ना। ये अंबेडकर साहब ने भी कहा था। तो विदूषक वो काम हमेशा से करता रहा है। आप चाहे आईएस जौहर की बात करें, चाहे आप उससे पहले बहुत सारे गोप जैसे कलाकार, उससे पहले त्रिवेदी जैसे कलाकार गुजरे हैं, फिर बाद में बहुत सारे महमूद, है ना। इनकी एक भूमिका होती ही होती थी हमेशा। और महमूद जो कि पड़ोसन जैसी फिल्म बनाते हैं, है ना, जो कि आइकॉनिक फिल्म है। ये अलग डिबेट हो सकता है कि हमारे यहाँ क्या कॉमिक फिल्में कम हैं सोशल की तुलना में, लेकिन कॉमिक का कॉमिक कंटेंट का प्रेजेंस हमारी फिल्मों में हमेशा रहा है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। विदूषक के मार्फत से बाद में तो हीरो ही विदूषक होने लगता है ज्यादा, खासतौर पर मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, चुपके चुपके जैसी फिल्मों को आप याद कीजिए, और ऋषिकेश मुखर्जी जैसा कि मैंने कहा उनकी फिल्मों में। ठीक है, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में, मैं देख नहीं पा रहा हूं। मैं देख अभी अभी कोई अभी कमेंट नहीं नहीं है देखा। सर। ठीक है, अभी गुड। ओके, लिंक है उसका अटेंडेंस। ठीक है। अब मुझे कुछ स्लाइड्स दिखाने की इजाजत दीजिए अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए, और उसके बाद मैं कुछ क्लिप्स जो उम्मीद है हमने अभी तक डाउनलोड कर लिए होंगे वो सुनेंगे। मैं इंटरमीडियलिटी की जो बात कर रहा था वो ये है, कार्टून ह्यूमर, फिल्म को लेकर के ह्यूमर। चूंकि सिनेमा के प्रति, सिनेमा ने एक लड़ाई लड़ी है हिंदुस्तान के इतिहास में खुद को बाइज्जत बनाने की। ठीक,
the Indian cinema had to earn its self-respect in the eyes of the public. That's why you didn't have women from cultured families, good families going into cinema. They were asked not to go earlier. So you had Tawaiffs, right? Phalke has to take recourse to his family members because women are not ready to work with him, even though those films are mythological films. So it's very interesting that it was not considered a great space, safe, secure, morally upright. It was not seen as that. So women had to fight first to work in cinema, especially middle class women. Or you could be, from Tagore's family. Then it was allowed. Devika Rani. Because no amount of gossip would matter to you, right? Or Sonalini Devi, who was Sarojini Naidu's sister, or several others who came from really high ranks of the society. So you see, so there are cartoons of all kinds. I'm not getting into that, but cinema itself is producing a lot of humor. Here you have the cartoons that you see, you have Sudhir Dar sketching for a magazine called Shama. Shama was published by Dehlavis from Delhi, Daryaganj, and Sushma was its sister publication in Hindi. Shama started in 1939 and Sushma in 1959, 58, 59. So Sudhir Dar was doing sketching for both of these cartoons. What he did, he took the mukra of a song and he then created another situation and he defamiliarized the mukra from the original context so people could laugh at this act. And there were lots of parodies. For example, Kaka Hathrasi was a great name. So for example, he wrote one song which I refer to here. Bol Radha Bol Sangam Hoga Ki Nahi was the original song in Sangam, right? Raj Kapoor playing Pied Piper, remember? Vaijanti Mala in the pond, right? And he is like Krishna. He has taken away her clothes as well, right? And is blackmailing her into admitting that Sangam Hoga, right? Which she ultimately says ki hoga. So that becomes the basis for this parody. बोल इतना महंगा गेहूं और इतना महंगा चावल, बोल इंदिरा बोल सस्ता होगा कि नहीं. This was in the 1970s. महंगाई we know is perpetual, सदाबहार है, गानों की तरह सदाबहार है. महंगाई कभी कम होती नहीं, वो बढ़ती है. ठीक है. So here you have Kaka Hathrasi and several others. They are using parodies, right? Like you have, bhajans being made on the basis of film tunes. Parvat ke piche kya hai, right? On the basis of a very famous song. Similarly, you have parodies like these, political parodies, social parodies, cultural parodies, parodies of all kinds. So cinema becomes the resource. Like for a normal peasant in North India, Ramcharitmanas of Tulsidas is the resource. So my grandfather would always recite Gosaiji. Gosaiji is Goswami Tulsidas. Whenever he had to quote somebody, he would quote Gosaiji. Similarly, we quote cinema, right? We quote a Gabbar Singh, we quote an Amitabh Bachchan, we quote anybody, Meena Kumari. So this is our Ramcharitmanas. Today's, text to go to. If we want to have a common understanding with the person we are communicating with, cinema gives us that language, that encyclopedia it is, which gives us anecdotes, सूक्तियां देता है हमें सिनेमा, क्योंकि सिनेमा में भी बहुत कुछ निचोड़ है जिसमें कई धाराओं का संगम है.
पूरी दुनिया की कई धाराओं का संगम है. That is why it becomes the great performance form par excellence. There is no parallel to it in the 20th century. Every other form gets eclipsed by cinema because it becomes that encyclopedic form, right? ठीक है, आगे एक और झलकी. थोड़ा ह्यूमर हमने देखा, थोड़ा कार्टून देखा, और कुछ पन्ने माधुरी के देखे जिसमें पैरोडियां भी छपती थी. ये है पीपल्स engagement with cinema. It's not as if सिनेमा डिश आउट कर रहा है और लोग ले रहे हैं. People are recording this history. They are participating in recording it. They are writing letters to radio, to film magazines. They are writing letters to radio stations. They are writing in with farmaishes to Radio Ceylon and to Vivid Bharati. They are creating parallel stars, as I said, parallel oral stars in people like Amin Sayani, in people like Gopal Sharma, in people like Manohar Mahajan, and several others. So what you see in the middle row here is a scene, the 1, 2, 3. This letter is to Radio Ceylon. This is from the Radio Ceylon Museum. This is inside Radio Ceylon. And this is also inside the record room when I went with a lot of listeners, old listeners too. And a lot of these listeners started crying because they had developed a bond with presenters. You also see presenters, a couple of presenters there in the frame. And it was their lifetime's dream to be at Radio Ceylon. So when they were there, वो रोने लगे, ऐसे जैसे कि किसी भक्त को, है ना, बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद, खासकर पुराने जमाने में, जब पहुंचने की उम्मीद नहीं रहती थी लोगों को, ठीक है. इंसिडेंटली बद्रीनाथ भी ऐसे लोग जो जा नहीं पाते थे, वो सिनेमा के जरिए ही देख पाते थे. सिनेमा ने उनको यात्रा करा दी. जैसे यूरोप की यात्रा कराई, वैसे बद्रीनाथ की भी यात्रा कराई. ये दिलचस्प है ना. तो वो अब सिनेमा हॉल के जरिए ही या सिनेमा के जरिए ही वो घूमते रहे कई जगहों पर. सो यू सी ऑन द लास्ट पैनल हियर, you see the BJP symbol, and you see the kind of systematic way in which Jagannath Basaiye, also known as Bandhuji, who was with me on that trip and who was crying when he reached Radio Ceylon, he writes to Radio Ceylon on a printed postcard. The printed postcard tells you the names of film and what songs to play, right? He just has to fill in and he will send it. He will send it, and the presenter, if she can accommodate his request, he will. Okay. So I'm talking about the labor of love that that listeners had, and the labor they created, and what kind of labor they were doing. Otherwise, they were tailors, they were agarbatti makers and sellers, they were panwalas, they were tea sellers. Because, people from upper echelons of the society would not write farmaishes. They were not looking for this cheap fame of 2 minutes. But these people, these ordinary working class people or small businessmen, people from Jhumri Tilaiya, people from Yavatmal, people from Badka Kana, people from Rajnandgaon, they are all writing, and not only to Radio Ceylon. They are also writing to Goa, to Nepal, to Afghanistan, anywhere. But songs were their main concern. Songs, they wanted to hear songs, and there were many kinds of programs that were played around those songs. Okay, let's move on. These are record covers, another form, gramophone records. The gramophone records
provided the first mobile listening package to us. Before that, you listen to film songs or to cinema only in the cinema hall. But on gramophone records, you could listen to Mughal-e-Azam dialogues. Even in the remote village, even in Begusarai, I know a friend's brother, he remembered everything from Mughal-e-Azam because he listened to those dialogues on a gramophone record. Sholay played a similar role, right? In the same year as you had Jai Santoshi Ma, right? Interesting country, interesting taste, interesting histories. Sorry, this is repetition. This is, these are places from where people connected. They got this ordinary happiness and also 2-minute fame, but they did it every day. And what did they achieve? They achieved a permanent fame for their small towns that would not otherwise be recognized. So they provided global recognition to a place like Jumri Tilaiya. Okay? And you can see here, it has been lampooned. Here is somebody called Anil Bhargav, who has documented the entire history of Radio Ceylon, the songs that were played each year, because it was a competitive format. Okay? Then here is print and music. The two come together here. Hathras is the place, Kaka Hathrasi is the name, but his whole khandan. From 1930s onwards, they started publishing a journal called Sangeet from Sangeet Karyalay. And then Film Sangeet also. They published a journal called Film Sangeet. On the editorial board of that journal, you had people like Sachin Dev Burman, people like C. Ramchandra, people like Ravi, several, leading composers, music composers, and singers of the time. So it's very interesting that they provided the resource, academic resource also for musicology, to study music. Okay, and they did not make distinction between classical music and film music. In fact, there's a healthy debate between the two. And so shall we now, I will stop sharing this right now and try and play one clip myself. If that clip works, well and fine. Otherwise, I'll request you to play the clips that I have sent. Okay, let me see. Let me see if it works. Can you hear? सुनाई पड़ रहा है? खिलौना के प्रोड्यूसर थे, फिल्म और जुबली फिल्म के निर्माता और डायरेक्टर है चंदर गुप्ता। फिल्म खिलौने के सितारे हैं मुमताज, जितेंद्र, जगदीप, शबनम, रमेश देव, विपिन गुप्ता, दुर्गा खुंटे, शत्रुघ्न सिन्हा और एक प्यार के मारे पागल के अमर रोल में संजीव कुमार। तेरी शान देखने वाली नर्तकी की इस कहानी को प्रोड्यूसर एल.बी. प्रसाद ने एक बड़ा प्रधान फिल्म बना दिया है।
धर्मेंद्र संजीव कुमार की महान फिल्म खिलौना के संवाद लेखक थे आचार्य कश्मीरी। गीत आनंद बख्शी ने लिखे हैं, जिन्हें संगीत में चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जान कर मेरा एलवी प्रसाद की हर फिल्म एक फिल्म होती है। फिल्म खिलौना प्रसाद प्रोडक्शंस की पिछले फिल्मों से कहीं ज्यादा महान है। सारे परिवार के लिए भावनाओं का अनोखा तूफान। खिलौना खिलौना। Fascinating piece of history for me and for all of us. We must have seen, rickshawalas in small towns going around advertising the new release in a particular hall, right? So this was done using this kind of record. While the rickshawala would announce the local inputs through his own mic, this thing was prepared as a package. Okay. And can you hear me? जी सर, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है, ठीक है। So the rickshawala, in between, he will stop it and then play, speak, stop, play, speak, stop, play, right? So we have all, I don't know how many of you have had listened to time to opportunity to listen to that, but I have definitely. But here you have the coming together of various media forms, and it generated a whole lot of excitement, expectation for the next change. Gulshan Nanda is also mentioned, and Gulshan Nanda became the biggest writer in the 1960s and 70s to supply stories to cinema. It's not the greatest writers that we know. It is very lowly pulp literature wala, Lugdi Sahitya wala Gulshan Nanda, who becomes the biggest supplier of cinematic content, right? So it's very interesting. And he was successful also because what he gave was a package. You could finish the story reading his novel in the same span as you can finish watching a film. Okay? There was humor, there was vidushak, there were songs also, there was space for songs in his novel, etc., etc., etc. Now, shall we play some of those clips? Have we gathered them from YouTube? And I will wind up in the end by after playing some of those clips. The point that I'm trying to make here is the hero of this song is a person who's declared mad, right? He is mentally challenged, Khilona, right? But he is given a different kind of treatment. He is the hero, right? He's given a different kind of empathetic treatment by the writer, by the producer, and the director. And there's a conflict over how to treat person with depression, person with, and there's a Tawayaf who comes to the rescue when the rest of the society does not know how to handle Sanjeev Kumar and his madness, right? So we remember Foucault immediately when we watch Khilona. That's one extreme of stress and depression. But there's a difference, right? In literature and cinema, there is a romanticization associated with such figures. That's in stark contrast to the way a clinic or modern medicine would treat such people, right? I would say that there is an ecology that gets created through the cultural tools
that are available to us, that ecology and that community is created through these narratives, through this kind of music, through these empathetic stories. And it becomes a huge resource for us. And it goes beyond very instrumental reasoning that हाँ सिनेमा देखो मजे करो stress खत्म हो जाएगा. No, there is also a pedagogic role that cinema is playing in this field. The way it is treating such characters, it asks us to think a bit about ourselves, our own attitudes, etc., etc. तो अब क्लिप चलाया जाए इंद्रजीत? नहीं सर, हमारे पास 10 मिनट बचा है और कुछ ओके, क्वेश्चन भी चैट बॉक्स में है, तो साथ में जो सब लोग क्वेश्चन भी जो ये सो देख लेंगे और 4 ही क्लिप बजे भी तक प्ले था करेंगे। ना? ओहो, जी जी सॉरी. ठीक है, नहीं जी क्लिप नहीं चलाना है तो छोड़ दीजिए. नहीं, वो क्लिप भी चला तब तक क्वेश्चन देख लेते हैं और ठीक क्लिप के बाद वो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। ठीक आपके है. स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है सर, या मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ? नहीं, मैं टाइम बचाते हैं ना. हाँ जी सर, ओके, हाँ दिख रहा है. दिख रहा है सर। ओके ओके. Attendance link, quiz link. No, participants can ask questions. उसके Are नीचे we, as a country, less serious about the comic and the humorous? Where does this tendency come from? It has been an old debate, but and it comes from, as I said, from the same Sufi Bhakti tradition, and you may say there's not much space in that kind of bhakti for humor, right? So there is a problem. Bhakti is treats itself very seriously. Those who are bhakts and poets, they treat themselves. But in the older Sanskrit literature and also in the dastans, medieval dastans, there's a lot of humor. There's a lot of, for example, if you look at Urdu literature and its satirical content, and a lot of people from Urdu literature are coming to Hindi cinema in the mid-20th century. And it's important. They bring that energy into cinema. So satire is supreme in Urdu literature. In Hindi, it takes time to find a niche. And we need to ask this question. Cinema is closer to Urdu than it is to Hindi, but it has elements of both. So what we get is, there's enough humor, I would say. Vidushak character, and there's so many of them. Johnny Walker was given so many songs. I.S. Johar, he himself he was not just only a writer, but he also became a producer. You should watch a film called Bewkoof, and Johar in Kashmir, Johar in Goa. He was great fun. He was a columnist. He used to write in English and Hindi. So I think there's a lot of humor. We haven't thought much about it. We need to. It is one of the understudied areas, I would say. So the archive has yet to be unearthed. हमें लगता है कि नहीं है काफी सिनेमा में. So that is how I would respond to Charu Vad's question. त्रिलोचन जी का कमेंट के रूप में ही है कि डॉक्टर त्रिलोचन सेना. पहले पहले लोग ज्यादा ये रात रेडियो सुनना जो सो स्ट्रेस हाँ, मतलब कम करता था, और आजकल लोग जो बच्चे जो है क्रिकेट या गेम में वो ज्यादा ध्यान देते हैं। एक बिल्कुल. कमेंट के रूप में ही है। और दूसरा भी कमेंट थी, कभी उसमें तन्हाइयों फर्क में ये भी और था ना कि पहले राशनिंग होती थी रेडियो पे, कि आप इतने समय इतने घंटे ही रेडियो में गाने बजेंगे या ये प्रोग्राम होगा, तो राशनिंग होती थी. अब क्या है, इंटरनेट में टैप की तरह पानी आप खोल देते हैं और म्यूजिक फ्लो करने लगता है, गिरने लगता है. तो वो अहर्निश 24/7 सप्लाई है ना. ये फर्क डिफरेंट है. हाँ, दूसरा भी कमेंट ही है, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, गीत मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। और कभी तन्हाइयों. हाँ,
के अगली लाइन क्या है इसमें? अमीन मैडम डाली है, मुल्ला तो क्या जा, तराइयों में तो भी क्या जा। याद आई, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी। हाँ, याद आ गया। और क्या पावरफुल गाना है ये, बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया। एक और कैटेगरी है बहुत दिलचस्प, और इस पर सोचिए कि उसका स्ट्रेस बस्टिंग से क्या रिश्ता है। एक फिल्मों में एक जॉनर है कर्स सॉन्ग का, ठीक है, यानी आपका दिल टूट जाता है और आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसको आप कोसते हैं, तरह तरह की तरह तरह के शाप देते हैं उसको, है ना, कि आप, तुम्हारा ऐसा बुरा हो, ये हो, वो हो, है ना। राज कपूर ने भी इस तरह के गाने गाए हैं मुकेश की आवाज में, कुछ महिला स्वरों में भी इस तरह के गाने गाए गए हैं। नाम अभी वो गाने मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन कर्स सॉन्ग्स ऑल्सो डू समथिंग। एक फिल्म आई थी ना अभी, एक कैफ, कैटरी, नहीं, ये करीना और द पर्सन हु बिकेम हर हस्बैंड, नवाब पटौदी सैफ अली खान, हैं, सैफ सैफ अली खान की movie। सैफ अली खान। जी इन दोनों की जो जी फिल्म थी वो लव स्टोरी, बहुत पंजाब में जो सेट थी, इम्तियाज अली की, ठीक है। जी। उसमें वो जो कहता है कि उसको फोन करके गाली दो, उस लड़के को जिसने तुमको, तुम्हारी जिंदगी नर्क बना रखी है, ठीक है। तो वो जो स्पिरिट है कि तुम खुद इतने डिप्रेशन में क्यों हो, जो जिसने तुम पर डिप्रेशन लादा है उस पर निकाल दो, ठीक है। यही चीज फिर से रेफर करती है वो लड़की जो पार्टी कर रही है ब्रेकअप सॉन्ग में। वहां भी उसी का रिटरेशन होता है, जब रणबीर कपूर कहता है कि फोन लगा, है ना, गाली दे, गाने में कह रहा हूं। तो गालियों की क्या भूमिका है स्ट्रेस बस्टिंग में, और उसको भी कल्चर में कैसे इस्तेमाल किया गया है, ये अपने आप में सोचने लायक बात है। ठीक है। जी सर। मुल्ला दो प्याजा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वही, मेरे दुश्मन थे मेरी दोस्ती चाचा को छक्कन तरसे। ने केले खरीदे सैफ। हैं। जी फिक्र तौसवी, बहुत बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। वही मैं कह रहा हूँ, हिंदी थोड़ा लैक करता है सटायर का, जहां तक सवाल है। उर्दू से कैचअप चल रहा है उसका, कैचअप मतलब हिंदी करती है। जब वी मेट, थैंक यू साहब, मुकरी साहब, यस यस, आप ही तो हैं, डॉक्टर सैयद मुबीन जहरा साहब, साहिबा, जी। शुक्रिया। तो वॉज इट मेकिंग एनी सेंस? और कुछ सुनना है? सर क्लिप स्वाति, वगैरह की अभी है, 4-5 मिनट है। चारुवाद रेज्ड हैंड, देखें हम। एक सवाल और है, कमेंट या। थैंक यू so पूछिए। much sir for हाँ, your historical explanation of cinema and radio from black and white to colored with thematic explanation. My question pertains to the changes that had been made post-liberal era. How do you see the theme, song, presentation, technological advancement shift from few radio stations to multi-FM channels? Nowadays, web series, etc. Still, people live to listen to old songs, old songs, but new songs are short-lived, stress relieving. तो बेसिकली इसके कॉन्टेक्स्ट में पुराने गाने अभी भी किस तरीके से उसके I बने think हुए हैं music बात। will always be, और stress relieving. It's a big question. I will have to take, we'll have to sit through another talk to do justice to the big questions that you're asking. Yes, lots of changes have taken place. I was dealing with it historically when we had the heydays of film music, as it were. Now we have made a departure. I feel Indian cinema is less Indian now. It is more Western. It's more Hollywoodian. It's uh, it's basically responding to the critics of the 60s, 70s who wanted less songs. So now we have less songs. We have smaller, I mean, hours also for films.
अब पैसा वसूल करना नहीं होता कि 2.5 घंटा पूरी फिल्म देखेंगे वगैरह वगैरह, शोले और लंबी हो सकती है, तो उतनी लंबी फिल्में हैं आजकल नहीं बनती हैं. Lots of changes, yes. Gizmos, special effects. Of course, we have been using special effects right from the Falke era. But nowadays, you have the technological advancement is such, use of CGI has, has gone to another level. Similarly, music is also being produced in different ways. It's not being produced together. It's not the same kind of teamwork that it used to be. It's pieced together. It's created but pieced together nowadays. And one department is not talking to the other department so much, it seems. And so lots of changes are happening. But interestingly, that music is available to us more now. Earlier, it was being rationed, but now it's available. That's why you have people recurating the same archive through WhatsApp and through YouTube channels and recreating those moments as well. Next question, sir. Very enriching and interesting lecture. Thank you, sir. I Yes, totally agree about also, yeah. research Thank you. aspect. There were obedience to Mukul whom Mehta. would go and watch in movie like Tony Walker, Bhavan, etc. Ajit, thank you. Thank you all for your questions, comments. If we have time, we can watch more clips. सर क्लिप हमारे नेक्स्ट स्पीकर शायद ज्वाइन कर चुके हैं. ठीक है, तब तो आप छोड़ दीजिए. अब यदि हम लिंक लोग यदि इसका लिंक है तो मैं मनीषा जी को दूंगा कि चैट बॉक्स में शेयर हाँ, कर दें, मनीषा जी को कहिएगा ताकि कि ब्रेक सभी में लोग सुना इसको, दें. जी, सभी लोग ब्रेक में इसको सुन सुना दें. पाएंगे. और सर आपका तो मतलब लगता है कि जब लेक्चर सुनते हैं तो हमेशा वो करनी लगता है, और खास करके जो आप वो मूवी का क्लिप और सारी चीज दिखाते हैं, आज बहुत इतना कम मतलब दिखाया. एक हाँ आज देख नहीं पाए मतलब लोग, लेकिन पोस्टर में कई सारी चीजें आई, इंटरेस्टिंग चीजें. और इसके पहले आपको जब सुनते रहे और उसमें आप प्ले करते हैं, तो उसको देखने के बाद जो सिनेमा को पहले जो हम लोग देखे थे, और जब आपके लेक्चर के बाद देखते हैं, तो उसको देखने का नजरिया एक बदलता है, उसमें बदलाव आता है. और फिर उस अप्रोच से चीजों को देखने और समझने का एक वो डेवलप होता है. और इतनी बारीकी से आप बताते हैं सिनेमा को लेकर, आपका तो खैर इसमें वर्क ही है, काफी गहरा मतलब रिसर्च आपका इस फील्ड में रहा है. तो निश्चित रूप से उसको सुनना और समझना, एक लेक्चर और वो भी 1 घंटे का अगर समय हो तो बहुत ही कम है आपको सुनने के लिए. आपके लिए कई घंटे अगर होंगे तो वो भी मतलब पर्याप्त नहीं होंगे उसमें भी, मतलब कि सुनने में. सिर्फ एक जी लाइन सर. बोलना चाहता हूँ इंद्रजीत. हाँ, जी जी सर. तो क्लिप्स हैं, इनको देखते हुए एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, कि कितनी जी सीरियस चीजों को कितने लाइट अंदाज में डील किया गया है इन गानों के जरिए. मेरा उद्देश्य यही था दिखाने का. भाषा विवाद पे, रेडियो कश्मीर विवाद पे किस तरह के गाने बनाए गए हैं. और तो देखिएगा ये क्लिप्स, इसमें आपको अंदाजा मिल जाएगा. ठीक है. आई विश आई कुड शो देम अर्लियर. थैंक यू एवरीबडी. थैंक्स और आपने इनवाइटिंग. बहुत बहुत अच्छे से बताया कि गाने का मतलब उस पर एक अलग से फिल्म का एक अभिन्न हिस्सा है जो गाना होता है. और हर त्योहार, हर अवसर के लिए गाने बने हैं. और गाने में ही स्ट्रेस को लेकर भी गाने हैं. और स्ट्रेस कभी कभी ना कभी होता है कि स्ट्रेस को जब हम कई बार सिनेमा में जाते हैं तो स्ट्रेस से भी स्ट्रेस को भी एंजॉय करते हैं. जैसे एक जादू के गेम में होता है कि जादू अगर हमें पहले समझ में आ गया तो फिर जादू का मजा नहीं होता. तो सिनेमा में भी कई सारे हॉरर मूवी होता है और इस तरह के मूवी होते हैं जिसमें कि अगर उस तरीके का फीलिंग नहीं होता है हॉरर का, कुछ डर पैदा नहीं होता है, तो हमें लगता है कि मूवी में मजा नहीं है. तो सही बहुत बात. बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर. और मैं समझ सकता हूँ कि आज आप कितने व्यस्त थे और फिर भी आप जुड़ सके आई एम और ग्लैड. समय दिया. और हमारे कॉलेज का हमेशा आप समय देते हैं, तो यार आगे एसडी, भी हाँ, हम जब मेरा भी फेवरेट जॉइंट बन गया है. थैंक यू. जी सर. जी सर. बहुत ठीक है. बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद सर. और थैंक. आगे भी जब भी हम गुजारिश करेंगे तो उम्मीद है कि आप इसलिए ना नहीं करेंगे, जरूर मौका देंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सर. ठीक है. थैंक यू इंद्रजीत. थैंक यू एवरीबडी. थैंक यू सर. बाय.